So we'll start with the next topic. Till now, we have covered the meaning of accounting, who are the interested parties in accounting information, the three main branches of accounting, and what is the difference between them. Today, we start with the next topic. As you can see on your screens, this is the accounting information system. So, what is the first thing that comes to your mind when you see this process? Input, process, output. What comes to your mind? This is resembling the working of a S class. Yes, no response. What happened? Already tired? Yes, good, Aryaman. This is resembling the working of a computer. When we do the basic definition of computer, then also we understand, we cram it like this, that there are input devices used to feed in information, then that information is processed, and you get your results through your output devices. So in accounting also, we are putting in financial information, then the accountant works on that financial information, that is the processing of the information, and then the output is communicated to the users. Input is all the transactions, all the economic events which involve money and can be expressed in financial terms. Processing is the process of accounting. So you can see the steps: recording, classifying, summarizing, analyzing, and interpreting the results. And output is in form of financial statements, which are then used by the respective interested parties. So this is how we define the accounting information system. So a structure used to collect, store, manage, process, and retrieve and report financial data, which can be used by different parties for their decision making. That is the accounting information system. Then you're given the meaning of each of the steps here, how with the output the decision making process is facilitated. Okay, next theory topic is what should be ideally the characteristics of accounting information. If you have a look, there are number of terms which are given here, but what we start with is that all accounting information should be understandable. Understandable in the sense, whichever party is using that information, it should be comprehensible by them. They should be able to comprehend that information. If accountant prepares these statements in a simple manner, in an easy to use manner, easy to read manner, then that information becomes understandable. Okay, but that does not mean that you compromise on the quality of information to be presented. Even if a transaction is complex in nature, that needs to be presented, but in a manner that can be understood. Okay, so for say for science students, this is something, accounting is a new subject, so it is something which is complex. But since you need to study this, we'll make an effort to make the subject as understandable, as simplified as possible. Okay. Next qualitative characteristic is decision usefulness. So you're sitting in an accounts class and I start teaching you economics. It is not useful for you. Okay, you will not be writing eco in your accounts paper. So decision usefulness is that on the basis of presented information, proper decision making should be enabled. Okay, the interested parties get their piece of information from the financial statement. As I told you,
एम्प्लॉइज का क्या इंटरेस्ट है, कितना प्रॉफिट आ रहा है, हमें कितना बोनस मिल रहा है। क्रेडिटर क्या क्या इंटरेस्टेड इंफॉर्मेशन है जिसपे वो डिसीजन लेंगे, अगेन जो फाइनेंशियल परफॉर्मेंस है, प्रॉफिट्स ओवर द इयर्स, क्रेडिटर्स कितने इंक्रीज हो रहे हैं या डिक्रीज हो रहे हैं, तो उसके बेसिस पे वो इंफॉर्मेशन, उस बेसिस पे दे विल टेक द डिसीजन ऑफ वेदर टू गिव गुड्स ऑन क्रेडिट टू योर बिजनेस और नॉट। ओके, any information is useful for decision making when it is relevant and when it is reliable. Okay, so first term used is relevance. What is relevance? That जो भी information है वो interested parties के लिए relevant हो, उनके लिए उसका कुछ use हो। Okay, now when is the information relevant? When it has predictive value, it has feedback value, and that information is timely. Predictive value is on basis of the information you can take some decision for the future. Okay, so investors जो हैं, जो ऑलरेडी इन्वेस्ट कर चुके हैं बिजनेस में, उनके लिए फाइनेंशियल स्टेटमेंट की फीडबैक वैल्यू होती है। फीडबैक वैल्यू क्यों है? कि आपकी इन्वेस्टमेंट पे आपको कितना रिटर्न मिल रहा है। पर जो प्रोस्पेक्टिव इन्वेस्टर्स हैं, जो अभी इन्वेस्ट नहीं कर रहे, बट दे आर लुकिंग टू योर बिजनेस फॉर इन्वेस्टमेंट, फॉर देम द फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन should have predictive value. That is, whether this business has potential to grow in the future. So say a business is consistently showing a growth rate of 10%. Even in the pandemic time, it is growing. So it is a very good investment. So for the prospective investor, this has a predictive value. Okay. Timeliness, अगर सही डिसीजन सही टाइम पर लिया जाए तभी उसकी वैल्यू है। Okay, so in the year 2020-21, if the business shows me the financial statements of 2015-16, then that is not useful for me for making decision. I would want to have a track of the latest accounting information. Only then that will help in decision making. Okay, then the second aspect is reliability of the information. So reliability means information should be verifiable, neutral, and representational faithfulness. अब इन टर्म्स का क्या मतलब है? सबसे पहले वेरीफाइबल। वेरीफाइबल क्या है? जिसको आप वेरीफाई कर सकते हो, जिसको आप क्रॉस चेक कर सकते हो। जब हम अकाउंटिंग की डेफिनेशन करते हैं तब हम कहते हैं इट इज द आर्ट ऑफ रिकॉर्डिंग। जहां पर भी आप फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हो, उसका सपोर्टिंग एविडेंस आपको वहां पर वो करना पड़ता है, रिकॉर्ड करना पड़ता है। यू हैव टू कीप अ रिकॉर्ड ऑफ ऑल दी इनवॉइसेस, कैश मेमोज, कोई परचेज सेल इनवॉइस है, कोई रजिस्ट्रेशन डीड है, इन सब पेपर्स का रिकॉर्ड रखना पड़ता है ताकि हर ट्रांजैक्शन के सपोर्टिंग एक एविडेंस आपके पास हो। सेकेंड टर्म इज न्यूट्रल। न्यूट्रल इज समवन who is not partial. So there is the requirement of financial statements is that they should be objective. They shouldn't be subjective. जो इंफॉर्मेशन दी हुई है वहां पर बायसनेस नहीं होनी चाहिए। ओके, तो बायसनेस कब होती है? जब आप एग्जैजरेट करते हो कुछ रिजल्ट्स को। जैसे मैंने आपको सत्यम स्कैम का एग्जांपल दिया इंडियन कॉन्टेक्स्ट में। सत्यम स्कैम वाज fudging of the accounting information. So what the company was doing, what the accountants, auditors of the company were doing, they were exaggerating the cash flows, fixed deposit assets ज्यादा दिखा रहे थे
और जो खर्चे थे वो कम दिखा रहे थे. ओके, दे वर ऑल्सो शोइंग एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज ऑन दी पेरोल. तो उस सेंस में टैक्सेस कम करने के लिए वो एक्स्ट्रा एम्प्लॉयज दिखा रहे थे, ये प्रूव करने के लिए कि इतने एम्प्लॉयज हैं, इतनी हमारी इनकम हो रही है, हमारे इतनी एसेट्स इंक्रीज हो रहे हैं, बैलेंस शीट वैल्यूज इंक्रीज हो रही है. ओके, so that kind of window dressing, artificial hiding, artificial manipulation, uh, artificial covering of information, manipulating the accounts, that leads to biasness of accounting statements. Okay, so that is not something which is neutral. एज इट इज जितना भी प्रॉफिट हो रहा है, जितना भी लॉस हो रहा है, दैट शुड बी रिपोर्टेड विदाउट एनी मैनिपुलेशन विद द रिकॉर्ड्स. ओके, नेक्स्ट इज रिप्रेजेंटेशनल फेथफुलनेस. इस टर्म में सब टर्म्स आती हैं. आई विल जस्ट शो यू. we'll have a look at the sub terms which are used. One is substance over form. If you have a look here, so substance over form. What does this mean? This means that we are preparing accounting records. We are not preparing legal records. So say today on 24/11, I sell my car and I receive the full payment. Say hypothetically I've sold my car for 4 lakh and I received the full payment on 24/11. Though the transfer of the car, RC and everything is completed on 27/11. Okay, so all the documents, paper formalities, they are completed on 27. Now in the books of accounts, this transaction will be recorded on 24, though the legal formalities are completed on 27. So we prefer substance over legal form. We prefer accounting substance, financial substance over legal form of the transaction. Okay. Next point to be covered here is neutrality. So that I have already explained you that the information should be neutral. Then representational faithfulness में prudence concept आता है. Prudence concept क्या होता है? It is in simple terms having a negative approach. Negative approach का मतलब क्या हुआ? When we make the financial statements, then we anticipate, we predict losses, but we don't predict profits. और losses, possible losses के लिए हम कोई ना कोई provision बनाते हैं. ठीक है? We are very cautious. Okay, like we in our real life, in our daily life, what we do is we purchase insurance. Okay, what is insurance? How do you define insurance? Anyone? Yes, what is the meaning of insurance? Okay, then I'll call out the names if these students are not responding. Yes, Ayan. Ayan is here. Yes, ma'am. Yes, Ayan. What do you mean by insurance? Don't know, ma'am. सिंपल कुछ तो समझ आता होगा इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट क्या होता है. नो आइडिया. कुछ सही नो, में नहीं पता. कुछ नहीं पता भाई इसके बारे में. चलो कोई नहीं. आर्यन. Yes, ma'am, I'm present. यस आर्यन, व्हाट इज इंश्योरेंस कॉन्ट्रैक्ट? Ma'am, insurance is simply, ma'am, ma'am, we do insurance to protect our financial losses, यस, वेरी गुड. and
Okay, to a large extent, you have given the definition. Yes, Gautam, please go ahead, add something to Insurance is, this. ma'am, Yes, insurance is particularly like we are insuring our product or any financial asset, that okay, if any loss occurs, oh, so we can get that claim and we are not at a loss. okay, very good. So, yes, I have some answers in the chat box also. So, most of you, yes, Pawan, it is a policy which can save. Vyom has given a very good definition. It is a safety net. Yes. So we approach a company and for a particular anticipated loss in return of payment of premium, that company promises to cover your loss, possible loss. Once a promise of future payout provided certain conditions and payment of premium is fulfilled. Very good. So, yes, most of you have answered it correctly. What we are doing is we are covering ourselves, we are securing ourselves from a future possible loss. Okay, and the insurer, that is the company, is giving you this facility in return of premium payment by the insured. Now, what are we doing? We are having a negative approach in the sense that we feel we might face loss in the future. So, this is not really a pessimistic approach, but this is being cautious. The same thing is done by the business also. Business wants to be financial statements are prepared with a cautious approach. Okay, so we anticipate losses, but we don't anticipate profits. Possible losses क्या हो सकते हैं business के लिए? We'll take up one or two terms here. One term is bad debts, and then when we are cautious, we also provide for depreciation. Okay? अब समझते हैं कि ये terms क्या होते हैं. Yesterday I gave you example that A, that is you approached a company B Limited and you purchased some raw materials for which B Limited gives you 1 month to make the payment. ओके, अब उधार किसके ऊपर है? आपके ऊपर है, ए के ऊपर है. ए बिकम्स द डेटर. ओके, और उधार किसने दिया है? बी लिमिटेड कंपनी ने दिया है. कंपनी बिकम्स द क्रेडिटर. ओके, सिंपल. दिस इज वन ट्रांजैक्शन. आप अपनी अपने बिजनेस में से आपकी ग्रोसरी शॉप है, आप कुछ सेल्स कर रहे हो राम को. Okay, Ram is one of your customers and you are giving him goods, you are giving him grocery items on credit. Okay, credit का मतलब आज वो आपसे राशन लेके गया, you give him 15 days to make the payment. Okay, now for A, दिस इज जस्ट द ऑपोजिट ट्रांजैक्शन. अब किसने उधार दिया है? उधार दिया है ए ने, और किसने उधार लिया है? राम ने लिया है. तो अब ए बन गया क्रेडिटर और राम बन गया डेटर. ओके, so same party can be creditor for someone and debtor for some other party. First, are these two examples clear to everyone? Because these are the terms which we'll keep using in accounts. Creditor, debtor. Debtor is one who owes money. Creditor is the one to whom the money is owed. Okay. So if there's any question in this arrangement, please ask me right now. Clear? Yes. Put a yes in the chat box.
If only Karthik is listening, okay. Yes, okay, thank you. So, this is one simple example of a debtor. Now, for the business, there are multiple transactions like this. Normal business world में आपको उधार पे गुड्स सेल करने पड़ते हैं क्योंकि वो नॉर्म होता है आपकी इंडस्ट्री का. अगर मैं मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस की बात करूं तो वहां पर ये उधार वाली ट्रांजैक्शंस बहुत होती हैं. यू माइट हैव हर्ड फ्रॉम योर पेरेंट्स आल्सो that is the industry norm which is practiced. But when we talk about services, then there is a lesser scope of debt there. Okay, because वहां पर मोस्टली कैश बेसिस पे काम होता है. ओके, वहां पे उधार का स्कोप नहीं होता. तो अब ऐसी ट्रांजैक्शंस हो रही हैं आपके बिजनेस में. बहुत सारे डेटर्स होंगे, राम श्याम सीता गीता, बहुत सारे डेटर्स होंगे. ओके, यस मानसी, विल कम टू प्रॉमिसरी नोट्स, बिल्स रिसीवेबल, पेबल, ये सब हम टर्म्स करेंगे डिस्कस. अभी हम सिर्फ सिंपल डेटर क्रेडिटर वाला टर्म कर रहे हैं. ठीक है. ओके, आपने 15 दिन दिए अपने डेटर्स को पेमेंट के लिए. उन 15 दिन के बाद 99% लोगों ने पैसा वापस कर दिया. एक सिंगल पर्सन है, एक सिंगल डेटर है जिसने पैसा नहीं दिया और उसने अब बोल दिया कि मैं आपको पैसा नहीं दे सकता क्योंकि से मेरी नौकरी चली गई कोरोना की वजह से. So now this becomes a bad debt. Bad debt is bad debtor. Now it is becoming impossible for you to recover this money. Okay, so this is known as bad debt, where the debtor gives up and you cannot claim the money back from the debtor. So every business makes a provision. Provision का मतलब क्या होता है? To set aside some money. Yes. Suraj, you are absolutely right. These are NPAs of banking sector. I was about to give that example. Let's say Vijay Mallya refuses to pay back the money to PNB or SBI. Refuses kya? Vijay Mallya says, I'm ready to pay the principal amount, but he's not ready to pay the amount of interest which has accumulated over the years. Okay, so that becomes a bad debt for the bank because you're not able to recover back that money. So in banking sector, that is known as a non-performing asset, NPA. ओके, और वो एनपीए डिक्लेयर होने तक भी बहुत सारी अकाउंटिंग एंट्रीज होती हैं. उसके बाद फाइनली उस डेट को एनपीए डिक्लेयर करा जाता है. ठीक है. अब आपके बिजनेस में, चाहे छोटा बिजनेस है चाहे बड़ा बिजनेस है, ऐसे सिचुएशंस आते ही हैं जहां पर ऐसे लॉसेस हो सकते हैं. तो इसके लिए पहले ही आप अकाउंटिंग एंट्रीज करके कुछ प्रोविजन बना रहे हो, कुछ स्कोप बना रहे हो कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट एवरी ईयर एटलीस्ट 2% ऑफ द डेटर्स will become bad debts. Okay, so what are you doing? You are having a prudent approach, you are having a cautious approach. कि past experience हमें बता रहा है कि at least 2% लोग fail करते हैं in making the payment for debt. So this is preparation of provision for bad debts. This is part of prudence concept. Okay. Next thing is depreciation. So what is the depreciation? I go to a Maruti showroom and I purchase a car. Say I purchase a car and I move out of the showroom. I take the delivery of the car and I make the payment. Okay. I reach the first red light outside the showroom. I take a U-turn. I go back to the showroom. I say, I don't like this car. Please return back my money. So, say I bought this car for 12 lakh rupees and I go back to the showroom. After 2 minutes,
to return back this car? Will I get my 12 lakh back from the showroom? No, we are not getting the same amount. They will say कि on road आ चुका है asset, अब इस asset पे depreciation लगेगा, ओके, जबकि वो कार शायद हार्डली 2 या 3 किलोमीटर फॉर एग्जाम्पल चली है, पर आपको सेम वैल्यू नहीं मिलेगी. So this is known, yes, Mridul, fault in the value of the asset. Okay, and this in accounting terms is known as depreciation. Now, this fall in value of asset can be due to usage of the asset, normal wear and tear. आप अपने घर में रह रहे हो, 5-7 साल में कुछ ना कुछ रिपेयर का काम हो ही जाता है, हर 2 साल में पेंट का जॉब हो जाता है. So this is normal wear and tear. Then another reason might be obsolescence. Obsolescence क्या होता है? टेक्निकली आउटडेटेड हो गया आपका प्रोडक्ट. ओके, आपने टीवी परचेज किया, अब जो टेक्नोलॉजी चल रही है एलईडी स्लिम टीवी, उसकी वजह से आपका टीवी टेक्नोलॉजिकली आउटडेटेड है, उसकी वैल्यू फॉल हो जाएगी, रीसेल वैल्यू फॉल हो जाएगी. या आपने कार परचेज करी, उसका अपडेटेड वर्जन आ गया, ओके, न्यू मॉडल आ गया उस कार का, तो आपके वाले मॉडल की वैल्यू क्या होगी? फॉल कर जाएगी. ओके, सो दिस इज नोन एज डेप्रिसिएशन. Depreciation is also a possible loss. Okay, so we make provision for depreciation also. So these are few simple examples of being prudent in your approach to preparing accounting statements. Okay, Pawan has a question, why to make provision? Can't we adjust bad debts? बेटा bad debts जब होंगे उससे पहले ही आप उसके लिए प्रोविजन बनाना शुरू कर देते हो, और प्रोविजन का भी इफेक्ट यही होता है कि वो आपके प्रॉफिट्स को कम करता है. ठीक है, तो आप पहले से ही प्लान करके चल रहे हो. अब बैड डेट्स शायद ना भी हो, पर आप प्लेस सेफ कर रहे हो कि आगे कभी भी फ्यूचर में बैड डेट्स हो तो हम उसके लिए कुछ प्रोविजन बना के चलते हैं. ओके, so that might obviously your estimation might not turn out to be exactly true. कुछ इससे ज्यादा भी आपको हो सकता है लॉस, या इससे कम भी हो सकता है. गौतम बेटा, ये जो टर्म्स है ना, ये हम करेंगे बाद में. अभी अगर मैं ये हाई लेवल वाली डिफरेंस समझाने लग जाऊंगी तो बाकी बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे. लेट्स मूव इन अ वेरी सिंपल मैनर. इवेंचुअली वील कम टू ऑल दीज टर्म्स, ओके, व्हेन वील स्टार्ट विद द प्रैक्टिकल पार्ट, बट रिजर्व प्रोविजन और ये सब मैं अभी समझाऊंगी तो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा. ओके, सो आई होप फॉर एवरीवन these two terms for the time being are clear. Okay, after that, all information, all accounting information should be complete. Do not miss out on any information which can affect the decision making by any of the parties. Okay, so let's come back to this. All this comes under representational faithfulness, and then any useful decision should meet both these parameters, comparability and consistency. Okay. Sahil, provision is made only for bank. It is a part of accounting, बेटा. बैंक की बात नहीं कर रहे, नॉर्मल बिजनेस की बात कर रहे हैं, जहां पर भी फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपेयर होती है वहां पे प्रोविजंस बनाए जाते हैं. Okay. The quality of a good accounting statement is that it should be comparable. Comparable, आप अपनी accounting statement दूसरी फर्म्स के साथ भी कंपेयर कर पाओ, अपनी फर्म की परफॉर्मेंस, जो मैंने कहा था इंटर फर्म परफॉर्मेंस होती है, और ओवर द इयर्स अपनी फर्म की परफॉर्मेंस को
जज कर पाओ कि कैसे मूव कर रही है आपकी फर्म. So that is intra-firm comparison. Okay. So any financial statement, accounting statement should enable inter-firm and intra-firm comparison. Okay. Then is consolidation. Consolidation refers to combining financial statements Okay, sorry class, there was some network issue, electricity issue, कुछ problem थी घर पे. Okay, so I'll just come back to the point. I'll also present the screen again because I've been logged out from here also. I'll just